Uh, Good morning to everyone. And today we are going to start our next lesson about Dreams on Monkey Mountain by Derek Walcott. Yesterday we studied about it's a summary, and today we are going to study about the major themes of the same lesson. Actually, major themes means the major ideas which are explored in the lesson in the fiction. Actually, it's an allegory like we studied yesterday. So, as I have informed you before many times, that whenever we need to explore the concept of major themes, we do have two approaches. Number one approach is about using summary that we already know. And number two approach is using parts of the summary according to each major theme. So it's all up to us. Either we want to go theme by theme, or we want to write all the themes together in one sentence, and after that we will go to the summary, and we will let the examiner select which part of the summary is related to which theme. We'll keep it open. But here actually I'll give you the themes, and I'll give you brief information about each theme, and then according to your taste you can prepare your own outline and your own notes. It's clear to everybody? So first of all, on the very first slide, we will see that the major themes. Number one, we have dream. Number two, we have identity. Number three, we have race. Four is about power, colonialism, and we have slavery as well. Like I told you before, because Dreams on Monkey Mountain is a part of post-colonial literature. And I have told you before that all the post-colonial literature, the pieces of literature, actually they share same type of major themes, because they all belong to the one type of or one category of literature, that is post-colonial literature. So these are actually the themes which cannot only be used for uh, this particular fiction, but that can also be used for so many other various types of post-colonial fictions as well. So we can use them also for the other stories that we will study about post-colonial. It's clear to everybody? Okay, beta. Let us now go through the all these themes one by one, and we will explore them, and we will also get some quotations that we can use in our summary. So let us go to the first theme. That's about dreams. I think we have learned some question before about the major themes of post-colonial literature. Am I right or not? What are those themes? Anybody can tell me? What are the themes of post-colonial literature? We study in the Heart of Darkness, and we also study in the another lessons. The very first theme was about colonialism and slavery, identity, and all things. They were the almost similar themes that we are going to study today. But what we are going to study, we are going to explore all the same type of themes in a different context. एक different context से हम उन सारे themes को जो है वो देखेंगे आज. इसके लिए okay, very good. Okay, okay, sure, so nice. Okay. Sure. So all these themes can also be used here. So we will have total more than 10 number of major themes that we can explore in Derek Walcott Dreams on Monkey Mountain. Is clear? So let us have these particular 6 streams one by one in front of us, and we will have the quotations as well as some sort of information from the lesson. हम quotations भी लेंगे बेटा, lesson में से information भी लेंगे. Let's have the first major theme, that's about dreams. As we studied yesterday, this is all it's a dream actually of the major protagonist or the major character of the story. So dream में बेटा number 1 पे हमारे पास जो चीज आएगी, it's about non-linear plots. And we were studying yesterday that the plot is not linear, and we were sometimes confused that a person is already dead, is coming back to life again. वो जो करेक्टर पहले ही जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो फिर जो है वो मस्टिक जो है वो दोबारा जिंदा होके आ गया था. So that's called non-linear.
plot. So this is one of the that's a symbol or a sign there. It's a dream narrative. Many events in the play do not make sense from a realistic perspective. बहुत ज़्यादा इसमें वाक़यात हैं हकीकी तनाजुर में कोई वो proper हमें sense नहीं देते. And here we have the Derek Walcott on quote about the play. The play is a dream. ये एक ख्वाब है. One that exists as much as in the given minds of its principal characters as in that of its writer. ये ऐसा ही ड्रीम है जो राइटर के जहन में भी है और इसके मेजर किरदारों के जहन में भी है. And as such it's illogical. और चूंकि ये ख्वाब है तो ख्वाब की कोई मंतक नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती. Derivative and contradictory. और इससे हम कुछ अखज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम बार बार इससे अखज़ करेंगे the things will go against each other, एक दूसरे के खिलाफ जाती जाएंगी. तो ये बेटा quotation है that we can use in our answer very well when we are writing about Dreams on Monkey Mountain by Derek Walcott. It's clear? If we go to the next slide about dreams versus reality. Oscillation between Makak's hallucination and our perception of reality. देखिए वो कहता है मुसलसल हम जो है वो एक यानी एक लगी हुई है, हम ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी मकाक की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी और कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. मकाक जो है वो कभी कह रहा मैं ये कर रहा हूँ, कभी कह रहा वो कर रहा हूँ, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बंदा जो है वो केज के अंदर कैसे जाके ये सारे का सारा काम कर सकता है. सो दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ शिफ्ट बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम्स. ओके. कंफ्यूजिंग इन द फर्स्ट रीडिंग. ऑफ कोर्स वी गॉट कंफ्यूज यस्टरडे. जब हमने पढ़ा तो हम खुद जो है वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कभी वो मर रहा है, कभी वो जिंदा हो रहा है. So we were really confused actually. So that's why it's confusing, because it's all about dreams. Here again we have Makak's own words in the form of prologue. I am an old man. मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ. Send me home. मुझे घर भेजे. Corporal ये दूसरे लोगों को वो कह रहा है जो जिंदा यानी जो लोग हैं वहाँ. I suffer from madness. मैं परेशान होता हूँ अपने पागलपन से. I just see things. मैं लाजम उन चीज़ों को देखता हूँ. Spirits just talk to me. बदरूहें या रूहें मुझसे बातें करती हैं. All I have in my dreams and they don't trouble your soul. जो कुछ मेरे पास है वो मेरे ख्वाब ही, और इससे आपको क्या जो है वो नुकसान हो सकता है. It's clear बेटा? If we go to the next one, you will learn all these proverbs actually that we are learning. Dream versus reality. Sirs, I does catch fits. मैं जो है वो लाजमी मेरा जो है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता. I fall in a frenzy every full moon night. मैं या वो आधा पागल हो जाता हूँ या पागल हो जाता हूँ हर जो है वो 14वीं के चांद के वक्त. आई डस बी पोजेस्ड. और बाज़ औक़ात मुझे मेरे पास वो चीज़ें आती हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं आती. एंड आफ्टर दैट सर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. और अगर मुझे कुछ ऐसा दौरा पड़ जाए तो फिर मैं अपने कामों का ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, लिहाजा मुझे वापस भेज दे. आई रिस्पॉन्सिबल ओनली टू गॉड हु वंस स्पीक टू मी इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन ऑन मंकी माउंटेन. मैं सिर्फ ज़िम्मेदार हूँ खुदा ताला की ज़ात का जो मुझसे एक दफ़ा एक खातून के रूप में मंकी माउंटेन के ऊपर उसने गुफ्तगू की थी. आई एम गॉड्स वॉरियर. मैं खुदा का जो है वो जिहादी हूँ या खुदा का लड़ने वाला हूँ. इसलिए बेटा मकाक की ये प्रोवर्ब है. इफ वी गो टू द नेक्स्ट वन, ड्रीम्स विद इन अ ड्रीम. ये कल हम देख रहे हैं ख्वाब के बाद हमें फिर एक जो उसने ख्वाब के अंदर ख्वाब आ रहे हैं. इन मकाक्स विजन ऑफ ड्रीम्स, ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग एन अफ्रीकन वॉरियर हु इज़ द सेवियर ऑफ हिज पीपल. अपने वो ड्रीम के अंदर जो है वो मज़ीद सोचता है कि मैं अफ्रीका के लोगों का निजात दहिंदा बनूंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा. सैडल माई हॉर्स इफ़ यू लव मी. मेरे घोड़े को जो है वो तैयार करें अगर आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है. मस्टिक अपने दोस्त को वो कहता है. एंड कट अ शार्प बैम्बू फॉर मी. और मुझे एक बड़ा सारा जो है वो बांस जो है वो काट के दें. एंड पुट मी ऑन दैट हॉर्स. और मुझे उस घोड़े पर बैठा दें. For Makak will ride to the edge of the world. तो मकाक जो है वो दुनिया के आखिर किनारे तक जाएगा. मकाक will walk like he used to walk in Africa. वो फिर इसी तरह वॉक करेगा जैसे वो अफ्रीका के अंदर जो है वॉक किया करता था. When his name was a lion. जब उसका नाम एक शेर होता था. यानी this is all about his dreams actually. If we go to the next one. Dream, a journey in which Makak finds his true identity. असल में ख्वाब ही थे जिसमें मकाक को अपनी असल जो है वो पहचान मिलती है. अदरवाइज राइट नो ही इज इन अ केज लाइक अ बीस्ट लाइक एन एनिमल. तो फिर उसको एट द एंड अपनी असल आइडेंटिटी का पता भी चल जाता है. ही रिमेंबर्स हिज रियल नेम फेलिक्स होबन. एट द एंड ख्वाब के बाद उसको अपना असल नाम जो है वो फेलिक्स होबन याद आ जाता है कि मेरा नाम जो है वो मकाक नहीं है. माई रियल नेम इज फेलिक्स होबन.
He finally recognizes his hybrid origin and goes back home, Monkey Mountain. असल में उसको फिर एट द एंड पता चल जाता है कि मेरा जो दो समतों वाला ओरिजिन है, मेरी जो बुनियाद है, और आखिर में वो अपने घर जो है वो मंकी माउंटेन पे चला जाता है. लेट मी बी swallowed up in the mist again. मुझे फिर इस धुंधले मौसम में गुम होने दें. एंड लेट मी बी forgotten. और लोगों को मुझे भूल जाने दें. सो दैट व्हेन द मिस्ट opens, जब फिर जो है ये धुंध साइड पे हो या खत्म हो, मैन कैन लुक अप, लोग ऊपर देख सके. एट सम स्मॉल क्लियरिंग विद अ हट, कुछ छोटे से साफ जगह को जहाँ एक झोंपड़ी लगी हो, विद अ स्मॉल सिग्नल ऑफ स्मोक एंड से, और उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा हो, फिर लोग कहें मकाक लिव्स देयर, मकाक वहाँ रहता है. मकाक लिव्स वेयर ही हैज ऑलवेज लिव्ड, मकाक यहाँ ही हमेशा से रहता है. इन द ड्रीम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के ख्वाबों में. अदर मैन विल कम, दूसरे लोग आएंगे. अदर प्रॉफिट्स विल कम, दूसरे प्रॉफिट्स उनके जो पैगंबर हैं वो आएंगे. एंड दे विल बी स्टोन्ड, और उनको पत्थर पड़ेंगे, लोग उनको मारेंगे जो निजात दे जाएंगे. एंड मॉक्ड, और उनके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा. एंड बिट्रेड, और उनको धोखा भी दिया जाएगा. बट नो, दिस ओल्ड हर्मिट इज गोइंग बैक होम. लेकिन अब ये पुराना बूढ़ा जो है वो अपने घर वापस जा रहा है. बैक टू द बिगिनिंग, फिर शुरू से चीज़ों को लेके चलेगा. टू द ग्रीन बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो है वो बेहतरीन और एक शानदार आगाज़ की तरफ. वर्ल्ड मीन्स उसकी अपनी बेटा जो इलाका है अफ्रीका की तरफ. कम मोस्टिक वी गोइंग होम, आ जाओ मस्टिक, हम जो है वो अपने घर जाते हैं. वी गो टू ड्रीम्स अगेन. ड्रीम अ जर्नी इन विच मकाक फाइंड्स हिज ट्रू आइडेंटिटी. ये वो सफ़र है जिसमें उसको अपनी असल पहचान का पता चलता है. द एपिलॉग लीव्स अ सिमिलर सेंसेशन ऑफ दोस मूवीज इन विच यू फाइंड आउट दैट एवरीथिंग हैपेंड ओनली इन समवन्स माइंड. कहता है कि इसकी जो एपिलॉग है, जो शुरू में बात होती है, ये उस एक फिल्म या मूवी जैसा सीन है जिसमें आपको पता चलता है कि जो भी चीज़ें वाक़या होती हैं वो लोगों के जहन में चल रही होती है. एंड वी क्वेश्चन अवर सेल्व्स, इज ऑल दैट रियल आर नॉट. और हम फिर अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये ऐसा हो भी रही है, बस हम जैसे हमारे साथ कल हुआ है कि रियलिटी भी है, ये बस कभी इधर पढ़ रहे कभी इधर पढ़ रहे. इट्स क्लियर. If we go to the next one, the identity of the characters, which are number one, the theme about dreams is gone, and now we are going to the second one about identity of the characters. Felix Hoban, मकाक का असल नाम होता है. मस्टिक दूसरा बंदा है. और कार्पोरल लेस्ट्रेड, ये वो जो आई थिंक पुलिस वाला था जो आया था, इसका नाम है मिलेचो. Mileto is actually a very common name and very inferior name that is given to someone in Africa whose parents are shared. One of them is white and another one is black. यानी एक parent white हो दूसरा black हो, तो he is called actually Mileto. Here we go to the next one. Let me just skip the ad. And here we go. Makak and his derogatory identity. Makak और उसकी जो inferior क्या ले कमतर पहचान है. अपोजिट ऑफ नार्सिसस, एक खूबसूरती के, नार्सिसस मतलब खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं, अपोजिट उसके मुखालफत में या उसके दूसरी तरफ. आई हैव लिव ऑल माई लाइफ लाइक अ वाइल्ड बेस्ट इन हाइडिंग. मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है वो छुप के मैंने एक जंगली जानवर की तरह गुजारी है. आई हैव लुक इन नो मिरर, मैं इतना बदसूरत था कि किसी शीशे को नहीं देखता था. नॉट अ पूल ऑफ कोल्ड वाटर, ना ही किसी पानी के जो है वो ज़ख़ीरे को. आई स्टिर माई हैंड्स वैन आई मस्ट ड्रिंक, जब कभी मुझे पानी पीना होता था तो पहले मैं पानी में हाथ मार के उस पानी को साफ करता था ताकि मुझे अपना चेहरा ना नजर आ जाए उसमें. ब्रेक अप माई इमेज, ताकि अपने चेहरे को ख़त्म कर दूँ. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज ही वॉज कॉलोनाइज्ड and his own identity was reduced to nothingness. Actually, he was no more like a normal person. He was turned into a beast because of the colonizers. वो कहता है जो मेरे कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने मुझे इस तरह कर दिया था कि मैं एक जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था. It's about the horrors of colonization. Decades being enslaved by his colonizers, he lost his identity. कई दहाइयाँ अपने मकबूजा या कॉलोनाइजर लोगों की वजह से उसने जो है ना वो अपनी पहचान को खो दिया है. He assumes a wild identity. अब वो जो है वो एक जंगली पहचान रखने वाला बंदा बन चुका है. निगर जिसका नाम है, या निग्रो भी इसको कहते हैं. If we go to the next one, what was his freedom? It's another theme of this story about freedom. No, oh God, no, I'm free, he declares. अब वो कहता है खुदा मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ. He is a Makak. How is Makak? अब ये आज़ाद कैसे हो सकता है? Because he is speaking to himself. Felix Hoban, फ्री तो फेलिक्स होबन है, जो कैद में था वो मकाक था.
ही रिमाइंड्स हिज रियल नेम एंड हु ही रियली इज। वो फिर याद करता है कि मैं असल में हूँ कौन और मेरा असल नाम क्या है। मस्टिक द कन्फर्म्ड मैन, मस्टिक जो उसका दोस्त होता है, ये बदला हुआ आदमी होता है, इसकी पहचान क्या है? ही इज द कॉलोनाइज्ड मैन हु एक्सेप्ट्स टोटली द इंफीरियरिटी वाइल्ड विल्ड इन हिम बाय द कॉलोनाइजर्स। अब ये वो मस्टिक जो है एक ऐसा आदमी है, इसने उस एहसास से कमतरी को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम कमतर हैं उन लोगों से, वो हमसे बेहतर है तहजीब में, बर्तरी में और यानी सारी चीज़ों में। ही इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म सिंस ही लर्न टू ओबे बाय क्वर्शन। ये उस आबादकारी निज़ाम का एक नतीजा है, क्योंकि अब इसने सीख लिया है कि किस तरह ताकत के इस्तेमाल से चीज़ों को मानना है, फर्माबरदारी करनी, नहीं करेगा तो इसको मार पड़ेगी। लेस्ट्रेड द मुलेटो प्रिटेंडिंग टू बी अ वाइट मैन। लेस्ट्रेड जो है वो कोशिश करता है कि अपने आप को एक सफ़ेद आदमी के तौर पे ज़ाहिर करे एक्चुअली, लेकिन ये है आधा सफ़ेद आधा काला, because he is one of his parents, they are from white origin and one is from the black origin, but he is no more, he tries to identify himself with the white people. That's why he's a policeman serving to the purpose of the white regime actually. He was seduced and brainwashed by the colonial system. उसको तरगीब दिलाई और उसके जहन साजी की कलोनियल निज़ाम ने। लेस्ट्रेडो डार्विनियन, लेस्ट्रेडो का एक अकीदा है, वो कहता है इन द बिगिनिंग वॉज द एप, शुरू में जो है वो सारे जो है वो ये बंदर थे, एंड द एप हैड नो नेम, और उनके नाम नहीं थे, सो गॉड कॉल हिम मैन, तो अल्लाह ताला ने उनको इंसान का नाम दे दिया। डार्विन जो चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन, वो ऐसा ही है कि पहले पहले सारे बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीधे होते गए। नो देयर वाज वेरियस ट्राइब्स ऑफ द एप, मुख्तलिफ जो वो कबीले बन गए बंदरों के। It had gorilla, baboon, orangutan, chimpanzees and blue-arsed monkeys and the marmoset, ये सारे उनके कबीले हैं। और and God looked at his handiwork, और फिर खुदा ने अपने जो है वो इस काम की तरफ देखा, and saw that it was good, और देखा कि ये अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा कबीले बन गए हैं। For some of the apes had straightened their backbone, कुछ जो बंदर थे उन्होंने अपनी बैकबोन रीढ़ की हड्डी को सीधा करके वो खड़े हो गए, and they became human beings, started walking upright, और सीधे चलना शुरू हो गए। But there was one tribe unfortunately that lingered behind, and that was the nigger. कहते हैं कि फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर लिया है, ये सारे बंदर ही जो अब इंसान बन गए, लेकिन एक कबीला पीछे रह गया जो हमारा कबीला, दैट्स एक्चुअली निगर। इट्स क्लियर, ये उसका कॉन्सेप्ट है बेटा, इट्स नॉट आवर कॉन्सेप्ट बाय द वे। He recognizes an entry, I returned to this earth my mother, I was what I am but no I am myself। मैं फिर इस दुनिया में आया और मैं जो हूँ वही पहले भी था, अभी भी वही हूँ, बट नो आई एम माई सेल्फ, अब जो है वो मुझे पता चला है कि मैं क्या हूँ। नो आई फील बेटर, मुझे बेहतर फील होता है। नो आई सी अ न्यू लाइट द ग्लोरीज ऑफ माई रेस, और अब मुझे जो है एक नई रोशनी नज़र आती है और मेरी नस्ल के अंदर जो एक अजमत है वो नज़र आती है। ये उनका अपने बारे में जो है वो एक रवैया। Here we go to the race and power, the next third one and fourth one actually, नस्ल परस्ती और ताकत, बिकॉज colonialism was a fight for power बेटा। पावर ऑन what? पावर ऑन लोकल रिसोर्सेज। जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी, उसकी पास माइट इज ऑलवेज राइट इन colonialism। सो सुप्रीमेसी ऑफ वाइटनेस, यूरोसेंट्रिसिज्म, इसमें जो है वो वाइट लोगों की बर्तरी थी और यूरोसेंट्रिसिज्म था, यूरोप वालों की इसमें जो है वो यानी उनके बेस के ऊपर था। रेजिस्टेंस ऑफ ब्लैक पीपल, और इसमें काले लोगों की मज़ामत थी, और अफ्रोसेंट्रिसिज्म, और ये अफ्रीका के जो अकायद है, जो तालीमात थी, उनकी जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर बेस कर रहा था। Here we go to the next one, race and power. Here we see that the Roman laws, they are stronger than the African laws. If we put them in a balance, they will be stronger. That's why the Roman laws were used by the colonizers to colonize the people from various different parts of the world, not only from Africa but also from Asia and some of them from the America also. Corporal Lestrado, ये जो पुलिस वाला है, वो कैसे इस पावर के बारे में देखता है, सारे करेक्टर्स का वन बाय वन मेजर थीम के बारे में देखेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ, और ये जो कानून का एक आलाकार बना हुआ लेस्ट्रेडो जो है, then he recognizes his true identity as black man and he becomes an advocate of the black law। आखिर में इसको पता चलता है मेरी जो असल पहचान है, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट नहीं हूँ, और फिर वो काले का जो ब्लैक का लॉ है, जो अफ्रीकन लॉ है, उसकी तरफदारी जो है वो करना शुरू कर देता है। फाइनली मकाक्स डेमोन्स्ट्रेट मर्सी एंड एक्सेप्ट्स लेस्ट्रेडो एज वन ऑफ देम।
फाइनली मकाक जो है वो फिर उसको भी तरस आ जाता है लेस्ट्रेडो के ऊपर, हालांकि उसने जुल्म किया होता है, लेकिन उसको कहता है कि नहीं, आप हम में से एक हो, हमारे साथ आ जाओ। दे वाइट रिजेक्ट हाफ ऑफ यू, वी ब्लैक एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू। कि वो आधा तुम्हारा रिजेक्ट कर देते कि तुम आधे काले हो, लेकिन हम तुम्हें पूरा एक्सेप्ट करते हैं। इस क्लियर? दीज आर द कोटेशन बाय मकाक एक्चुअली। नो द नेक्स्ट वन इज colonization, race and colonization. The West Indies were colonized by British actually, and with this, it's come to the end. It's clear to everybody. Wish you all the best. Thank you.